मेरे को 2009 में मिला था सीए बनने के बाद। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला रिकॉग्निशन था जब मुझे मिला, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर इमोशनली बात करूँ तो यस, मतलब दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब ये एक मेरी लाइफ का पार्ट है जिसकी वजह से मैं आज हूँ, जिसकी वजह से एनआरआई 182 है, जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीए की जर्नी से लेकर सीए के अवार्ड तक। This particular memory is of where we had opened our office in COVID and where people were struggling for their business. At that time we were growing. Somewhere in 79, I started teaching. These are cards which the students in those years from 79 to till date, till 2004, 2006, they have given me on various occasions. Dear sir, you take time to listen, encourage and to care. You make a real difference. With the wisdom you share, teacher, you are special to me. You will always be. With lots of love and regards, Geeta. Right now what I have is my classroom notes. I know that my classroom notes, these running notes or classroom notes have been circulated widely during my class days, because I used to meticulously attend in a disciplined way every single class, and I used to take notes of every single thing that is being told. And I know I should not be bragging too much about myself, but then that's the real thing, is that I used to also have a printed handwriting, so people used to love this notes. जब वो फेयरवेल पार्टी हुई थी हमारी 12th की, तब का है ये। मेरे साथ में जो भी सब हैं ऑलमोस्ट सारे आईआईटी से पास आउट हो चुके हैं सब लोग, और सारे आईआईटी एस्पिरेंट्स से आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं भी साथ में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, बट फेट हैज़ अदर प्लान्स, सो मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। मैं आईआईटी के लिए साइंस पढ़ रहा था, बट वो नंबर्स इक्वेशंस नहीं रहे, बिजनेस बन गए। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता पार्क स्ट्रीट, एंड आई वाज द पर्सन और द स्टूडेंट जो कंटिन्यूस 3 साल एवरी सैटरडे आई वाज द टॉपर। और ये फर्स्ट टाइम जो था ये सिलेक्शन टेस्ट पे मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला कॉलेज से। जब अनाउंस हुआ था वी वर देयर इन द ऑडिटोरियम, और हम बैक बेंचर में बैठा हुआ था, एंड दे वर अनाउंसिंग इट कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलेज ये हुआ है एंड वी आर अवॉर्डिंग दैट स्टूडेंट। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एंड आई वाज टेलिंग कौन इतना पढ़ाकू है। 2 days ago it was my birthday, and I celebrate my birthday at a school who have underprivileged children, who are disabled, who have hearing issues, who have issues by visual issues, who cannot speak properly. This card itself brings back a lot of memories, and this is something I get whenever I visit there. One of the first cards that I got. It's a very small message, and they have all the kids have signed, have written their names and signed, given their names out. It says, to Ayush sir, wish you many happy returns of the day. If you see someone without a smile, give him one of yours. Is the diary, or you can say, if you see that it's not a diary, it's a notebook, because I started maintaining the diary from when I was in 8th standard. This diary is so near to my heart because whenever I'm in need of any mentorship, right? Yes, I do connect to mentors outside, but the initial, even after connecting to mentors, right, we get many options. But from all those options, when you want to arrive at a choice, then this is the diary which helps me a lot. I jotted down everything in this diary, and it helps me to arrive at a clear and a conceptual choice.